एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज शायोनी। सो आज मैंने क्रिएट किया है ये करवा चौथ मेकअप लुक एंड इट्स अ वेरी इजी मेकअप लुक गाइस। सो दिस ब्राउनिश ब्लैकिश गोल्डन स्मोकी आईज एंड विद रेड लिप्स, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। तो ये लुक सिर्फ करवा चौथ में नहीं, आप कोई भी ओकेशन में साड़ी के साथ क्रिएट कर सकते हो, कोई भी कलर के साड़ी के साथ क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा जाएगा। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये इजी पेजी मेकअप लुक को देखने के लिए देन ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए गाइस, और ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है एंड मैंने लिप बाम भी अप्लाई कर लिया है। सो अब मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। मैं ब्लू हेवन का प्राइमर मैं आज अप्लाई करूंगी। सो कोई भी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एंड ऑल्सो आपके बेस को स्मूथ फिनिश देने के लिए, आपके जो स्किन है उसको स्मूथ दिखाने के लिए, तो प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग, सीरियसली बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सो चलिए, प्राइमर तो अप्लाई करना हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू कंसील माई फेस, माई स्पॉट्स एंड छोटे मोटे जो पिंपल्स है उसको मैं कंसील कर लूंगी विद कंसीलर। मैं बहुत ज्यादा लाइट मैं बेस क्रिएट करूंगी आज, क्योंकि करवा चौथ में वैसे ही फास्टिंग करना पड़ता है। सो हेवी मेकअप शायद सब लोगों को पसंद नहीं होगा। सो दैट्स वाई मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ ताकि सब कर सके। सो आज मैं अप्लाई करूंगी मिस क्लेयर की फुल कवरेज मेकअप, दिस वन। तो ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। बट थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया है कि ये जो शेड है तो ये मेरे स्किन कलर से 2 शेड डार्क है। ऑनलाइन में ये थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स है ये होती रहती है, बट डोंट वरी गाइस। तो चलिए, फर्स्ट मैं ये कंसीलर को अप्लाई करती हूँ। तो आप चाहो तो आप ब्रश या ब्लेंडर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो, बट फिंगर ही काफी है मेरे लिए। मिस क्लियर की जो मेकअप है तो इसको आप कंसीलर प्लस फाउंडेशन दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। इट्स वेरी मच क्रीमी, एज यू कैन सी इट्स टोटली क्रीमी एंड इसकी जो कवरेज है दिस इज मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज, फुल कवरेज नहीं है बट मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है। एंड या इट्स वेरी नाइस, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, स्पेशली फॉर विंटर बहुत ही अच्छा है। आपकी जो स्किन शेड है, स्किन का कलर है, तो उससे 1 या 2 शेड लाइट कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर या बनाना पाउडर आप ले लीजिएगा एंड देन आपके पूरे फेस को सेट कर दीजिएगा। तो जो डार्क है, सो डार्क एंड लाइट मिक्स्ड होके आपके जो स्किन कलर है वो शेड में आ जाएगा। तो मैं यूज करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट से ये जो बनाना शेड है, दिस इज क्वाइट लाइट फ्रॉम माय स्किन कलर, एज यू कैन सी गाइस, काफी ज्यादा लाइट है। तो मैं इसको एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मेरे पूरे फेस में अच्छे से मैं अप्लाई कर लूंगी। As you can see guys, I hope you can understand. तो नाउ आई एम गोइंग टू फिल माई आईब्राउज। तो उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्राउ किट। तो इसमें एक बहुत ही अच्छे साइज की मिरर है, एज यू कैन सी। तो फर्स्ट मैं ये लाइट ब्राउ शेड को ले रही हूँ, ये लाइट शेड को देन मैं मेरी ब्राउ की फ्रंट पोर्शन में अप्लाई करूंगी। देन आई एम टेकिंग द डार्क शेड एंड मेरी टेल को मैं फिल कर लूंगी, मेरी नहीं, मेरी ब्राउज की टेल को।
देन ब्राउ को एक ही प्लेस में सेट करने के लिए मैं ये सेम एप्लीकेटर के हेल्प से ये जो ब्राउ सेटिंग वैक्स है इसको मैं पिक कर लूंगी लाइक दिस एंड देन मैं मेरी ब्राउ को सेट कर लूंगी। You make me feel so crazy. My heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. तो चलिए थोड़ा सा आई मेकअप कर लेते हैं। बहुत ही इजी आई मेकअप है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो मैं यूज करने वाली हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन रिलोडेड की हाइप्नोटिक आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैं पिक करूंगी ये ब्राउन शेड को विथ अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, थोड़ा सा टैप कर लूंगी। देन आईज की आउटर भी एंड क्रीज में मैं ब्लेंड कर लूंगी। देन एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से, एक बिग पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं ये जो चारकोल शेड है, चारकोल ब्लैक, इसको मैं पिक करूंगी। एंड दिस आई शेडोज आर सो पिगमेंटेड गाइज, वेरी वेरी पिगमेंटेड। देन मैं आईज के आउटर कॉर्नर में लाइक यू नो वी शेप और सी शेप मैं इसको अप्लाई कर लूंगी एंड देन ब्लेंड कर लूंगी। Loved me for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. But I don't close the door. नेक्स्ट मैं ये ब्राउन शेड को लेके मेरी लोअर लैश लाइन में स्मच कर लूंगी। So crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel. नेक्स्ट फिंगर की हेल्प से ये जो गोल्डन शेड है इसको मैं मेरी आईलिड में, हाफ ऑफ द आईलिड में प्लेस कर लूंगी। एसेंस की आई लव एक्सट्रीम क्रेजी वॉल्यूम मस्कारा मैं लगाऊंगी एंड ये मेरी सेकेंड बॉटल है। दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग मस्कारा गाइज, बहुत ही अच्छी है। ये लेंथ एंड वॉल्यूम दोनों ही बहुत ही अच्छा देता है। Nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting the chance. अगर आप चाहते हो तो आप ये आई मेकअप को ये मस्कारा लगाने के बाद ही आप फिनिश कर सकते हो, बट मैं फॉल्स आईलैश अप्लाई करूंगी। सो अब मैं हल्का सा कंटूरिंग कर लूंगी। सो वही मैं वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट यूज कर रही हूँ। तो उसमें से ये जो कूल टोन ब्राउन शेड है, सो मैं इसको पिक कर लूंगी। Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई हाइलाइटर। तो ये भी वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर है प्रीशियस पेटल शेड में। But when there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we. एंड लास्ट में मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। सो ये लैक्मी फॉरएवर मैट की लिक्विड लिपस्टिक है। इसकी फुल रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो लिंक आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Back again, you make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. लास्ट में ये पूरी
पूरी मेकअप को सेट करने के लिए एंड बिल्कुल लॉक इन करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड ये निक्स की ड्यूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे है। दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम मेकअप सेटिंग स्प्रे गाइस। तो ये मेकअप सेटिंग्स की रिव्यू भी मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, तो वो भी लिंक आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। When there's no hope hiding, no chance can't. सो गाइस लेट मी नो कि आपको आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि वो बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड आप मेरी वीडियोस मिस कर देंगे। सो बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। So guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Till then, bye.